वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ एक्सेल में जो आपके एक्सेल चार्ट रिलेटेड तो स्किल्स अपग्रेड करेगा ही, साथ ही में जो 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स होते हैं जो कोई भी प्रोसेस में गैप या फिर प्रोसेस में कुछ एरर्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज किया जाता है, जिसको पैरेटो चार्ट यूजिंग पैरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक भी इसमें हम कवर करेंगे। तो बेसिकली होगा कैसे कि वी विल लर्न बोथ पैरेटो एनालिसिस और पैरेटो प्रिंसिपल अलोंग विथ प्लॉटिंग चार्ट ऑफ पैरेटो। सो मैं आपको एक हिंट या फिर एक ब्रीफ बता देता हूँ कि पैरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है। आप मान लीजिए एक कोई भी आपका एक बिजनेस या प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसके अगर आप रीजंस या कॉजेस आइडेंटिफाई करके अगर उसको लिस्ट डाउन करते हैं और उसका ऑकरेंस अगर आप उसके अगेंस्ट मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कभी देखिए एक आपको टेबल दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज के लीव के जो टॉप रीजंस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो फॉर एग्जांपल हेल्थ इश्यूज। So for let's say for given X period of time, 40 times an employee have taken leave due to health issues. Similarly, family emergency के वजह से 25 leaves हुए हैं, vacation के लिए 7 leaves, marriage 3, family functions 3, transport issues 2 और strike के वजह से 1। ऐसे मान लीजिए ये causes है जिसके वजह से आपके टीम में जो एम्प्लॉयज है उन्होंने लीव्स लिए हैं। सो अभी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि विच कुड बी यू माइट फील दैट इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे तो सामने सीधा दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज और फैमिली इमरजेंसीज की वजह से ही ज्यादा लीव्स हुए हैं। यू आर करेक्ट, बट देन दिस इज अ वेरी स्मॉल डेटा. In practical life, you will have a large set of data where identifying it with naked eyes, it won't be that easy. So what we can do is basically we can plot a chart and we can identify top 20% contributors who are causing majority of the issues. So इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं using a Pareto chart मैं ये ढूंढूंगा कि कौन से टॉप रीजंस है जिनके वजह से 80% ऑफ द टाइम्स मेरे टीम के बंदे लीव्स ले रहे हैं। सो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो पहले आपको इसके लिए 2 कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे। यहाँ पे मैं पहला कॉलम ऐड करूंगा क्यूमुलेटिव। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मेक श्योर दैट योर डेटा इज सॉर्टेड इन descending order. That means highest or largest value is on top and the lowest value is on bottom. So what I'll do is for first cell I'll take this as it is because I have nothing to add here. But from second cell onwards, what I'll do is I'll give a formula is equal to this, that is count of this region plus cumulative total. I'll enter and then I'll drag it down. Okay, so you can see total count is 81. Here also cumulative total is 81. So this is correct now. Now what I'll do is I'll add one more column. Let's give this as percentage count. Okay, and now my formula would be is equal to, now this is very simple math. You need to just calculate the percentage for the given reason. So for health issues, this is my count. I'll divide it by total, that is this cell, and I'll freeze this cell so that it remains constant throughout my calculations. I'll enter, and here you can see percentage sign. You can click on percentage and I'll increase the decimal points and I'll drag down. Now here it is 100%, which means our total is correct. Okay, now very simple step.
Now select this column with a heading, exclude this B column, that is count. I'm sorry, select this column as well. So what I'll do is I'll select this and I'll exclude this cumulative column and I'll select this column. Okay. Now I'll go to insert and here you can see we have option of recommended charts. यहाँ पे अपने पास recommended charts का option है. मुझे यहाँ पे जो second chart दिख रहा है वो मुझे select करना है. क्यों ये select करना है ये मैं आपको बताऊंगा. तो पहले मैं इसको select कर लेता हूँ. I'll say okay. Now see what has happened here is this is my primary axis and this is secondary axis. Okay, so on primary axis I have plotted the count column chart for count. So you can see health issues and this is 40, then family emergencies and this is 25. So likewise I have plotted for all 7 regions that I have, and this is nothing but a line chart for the cumulative percentage count. So this particular data is been plotted for this line curve. Okay, so here you can see count and percentage count. So I'll delete this, I don't require it. I'll remove these grid lines as well. I'll simply drag this. I'll make it large so that you all can see it properly. And now what our Pareto principle states is, go to insert, in illustrations select shapes and I'll select a line, single straight line. From this 80% mark I'll draw this horizontal line till it touches the line chart or curve. Now wherever it touches this curve, simply stop there, take one more such line and draw one perpendicular or vertical line here from this point. So this is nothing but our interpretation that 80% of the causes are caused by 80% of the impact or results are caused by 20% of the causes. So here we can conclude that health issues and family emergencies are the top contributors, which impacts around 80% of the time for the total lives. So again, let me tell you, you might find this as very obvious, but let me tell you from my example, my experience and the work that I have done, that while you actually work on large set of data, this gives a very good and great insight that what are the top contributors in your result areas. So इसमें हम लोगों ने 2-3 चीजें यहाँ पे देखी है. First we saw what Pareto principle or what Pareto chart is, and the second one is we have seen how we can draw the graphs or charts in Excel. So this is a Pareto chart or Pareto principle for you. I'll suggest you guys take any random data of, there is a lot of data available online. Take any random data and try plotting this Pareto chart with that data, and I'll assure you that you'll definitely find some good insights and good experience that how it works. So hopefully you guys have liked this. Please do subscribe, share and like if you are finding this useful. Thank you so much for watching this video.